So, as they say, winter is coming. It's not only coming, but it has arrived in Mumbai. But if we get to the good part is कि विंटर है पर बारिश नहीं है. तो पहले दिन में 70 ओवर का खेल हो चुका है. आज भी अच्छी धूप है यहाँ पे मुंबई में. इसका ये मतलब है कि पूरे दिन का खेल हमें जरूर देखने मिलेगा वो वानखेड़े स्टेडियम में. गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू द दूसरा शो ऑन द डिजिटल टू स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म. और हम अभी बात करने वाले हैं कि पहले सेशन में जो कुछ होने वाला है और कल जो 2 सेशन में हुआ था उसके बारे में विश्लेषण हम करने वाले हैं. मेरे साथ है ऋत्विक सेन और प्रसन्ना संत. गुड मॉर्निंग ऋत्विक और प्रसन्ना. गुड ऋत्विक मॉर्निंग. से गुड मॉर्निंग. शुरुआत करेंगे. ऋत्विक Good का morning. क्वाइट एन एक्साइटिंग डे यस्टरडे और ऐसे ही कुछ आज भी देखने मिलने वाला है. Good morning. Good morning, Chaitanya. Good morning, Prasanna. Good गुड morning मॉर्निंग to the ऋत्विक. viewers. गुड मॉर्निंग. कल कल बहुत ही exciting day था. Day one where we had lost the first session, but like Chaitanya had mentioned last evening as well, 70 overs were still completed, which was good because we got to see a gripping day of Test cricket. India ने शुरुआत अच्छी की थी. First जो partnership थी 80 runs की अग्रवाल और गिल के बीच. And then India lost that flurry of wickets, and I know there's been a lot of debate about some of them. So I'm sure we will get to that in due course. But then again, the next two partnerships I think were crucial and very very well played out by Team India. First was obviously with Shreyas Iyer and Mayank Agarwal, and then at the end with Riddhiman Saha and Agarwal as well. Mayank Agarwal was probably this was probably the most impressive innings I've seen in a long time. He managed the innings very well. I think initially, if you remember, your first 80 runs ki partnership thi, usme he had scored about 30 odd because Gill had taken the initiative and was scoring a lot freer. After Gill got out and that flurry of wickets, when Shreyas Iyer came in that next 80-run partnership, Mayank Agarwal scored 62 of those runs. So obviously he understood the need to take the lead because he was the well-set batsman, and that's what we've spoken about earlier. हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि when a batsman gets a good start, he needs to convert that into something big. And I think Mayank Agarwal's innings yesterday was a prime example of that. So yeah, it should be a very, very interesting session this morning to see how can Team India take that momentum forward from day one. गुड मॉर्निंग प्रसन्ना. ओपनिंग कमेंट्स. या गुड मॉर्निंग चैतन्य. गुड मॉर्निंग ऋत्विक. आई थिंक जैसे ऋत्विक ने कहा कि 221 फॉर 4 इंडिया को फाउंडेशन जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो मिल गया है. Now they need to build on this score. They will definitely be looking at about 375 400 as a first inning score, क्योंकि ये जो पिच है, इस पिच पे अगर कल हमने देखा कि एजाज पटेल को अगर इतना बाउंस और टर्न और पेस मिल रहा है, तो सोचिए रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और उसके बाद जयंत यादव को कितना असिस्टेंस मिलेगा. So if you look from that perspective, 375 400 should be a good score, and that is where again मयंक अग्रवाल का आज का जो एक क्रूशियल रोल होने वाला है, वो कैसे उसको निभाते हैं उसको देखना पड़ेगा. देखिए 120 रन बेहतरीन बनाए, बट हमने कल भी डिस्कस किया था चैतन्य कि कितनी कंपटीशन है टॉप ऑर्डर में. वहां पे साउथ अफ्रीका ए टूर में भी 3-4 बल्लेबाज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां पे ऑलरेडी कंपटीशन हम देख रहे हैं, और कहते हैं ना, द ओनली वे टू बीट कंपटीशन इज परफॉर्मेंस. तो अगर आप 120 कल किए हैं, आज फिर एक बार और 100 करने की सोचो, बड़ी इनिंग खेलो. नॉट ओनली डू यू टेक इंडिया टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बट यू ऑल्सो टेक योर ओन पोजीशन इन द टीम एज वेल टू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शोर. तो यहां पे टीम मोटिव भी है, थोड़ा इंडिविजुअल मोटिव भी है. रिद्धिमान साहा के पास भी चैतन्य और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. कानपुर में उन्होंने जो चाहिए था बैटिंग में वो पूरा करके दिखाया, बेहतरीन बल्लेबाजी की. यहां पे भी कल जो सपोर्ट चाहिए था एंड ऑफ डेज प्ले के दरमियान, वो पूरा अच्छे से सपोर्ट दिया रिद्धिमान साहा ने. आज और एक हाफ सेंचुरी, मे बी अ सेंचुरी अगर कर लेते हैं, then you cannot drop Riddhiman Saha as well. One of the oldest wicket keepers to play for India as far as the age is concerned. और बहुत अच्छी विकेट कीपिंग तो वो करते ही हैं, बैटिंग भी अभी अच्छी कर रहे हैं. And that is where Agarwal and Saha, if they can start from where they left yesterday, India can definitely be in a very, very strong position looking at lunch and maybe tea as well, Chaitanya.
सो इंडिया इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन. कल 70 ओवर का खेल हो गया था एंड इंडिया 221 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. मयंक अग्रवाल बैटिंग ऑन 120 रन. रिद्धिमान शाह उन्हें कंपनी दे रहे हैं 25 रन बना के. उसी बीच हमारे साथ व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं ऑन द दूसरा शो. नवरत्न गुप्ता कह रहे हैं गुड मॉर्निंग और मयंक टुडे माइट स्कोर 200. दैट माइट बी समथिंग टू वॉच फॉर. और वो कह रहे हैं कि इंडिया का स्कोर 325 से लगभग 340 तक हो सकता है. जी हाँ, आपके कोई कमेंट्स है, आपके कोई सवाल है तो आप लाइव चैट में लिख के हमें भेज सकते हैं एंड वील फीचर योर क्वेश्चंस लाइव ऑन द दूसरा शो अलोंग विद योर नेम. तो अगर कुछ चीजों के बारे में अगर विस्तार में अगर हम चर्चा करें तो कल विस्तार में चर्चा करने जैसा एक टॉपिक हमें मिला था जो कल हमने पोस्ट स्टंप सेशन में नहीं लिया, वो आज लेंगे. और अंपायर्स कॉल से शुरुआत करेंगे ऋत्विक कि अंपायर्स कॉल पे इतनी सारी चर्चाएं हो रही है. सोशल मीडिया बोलिए या प्रिंट मीडिया बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलिए, हर जगह पे एक ही चर्चे का विषय है और वो है दैट एलबीडब्ल्यू डिसीजन इवन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वाज देयर इनकंक्लूसिव एविडेंस. ओवर टू यू ऋत्विक. No, I don't think, to be honest, personally speaking, I think that there was inconclusive evidence. And we've spoken about this before on the show. हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि technology needs to be used for the benefit of the game and to make sure that the right decision is taken. In the case of Virat Kohli's dismissal, first and foremost, you can't blame the on-field umpire. Anil Chaudhary, जो भी देखें उस delivery की, yes, it was a good delivery by Ajaz Patel. Kohli was sort of beaten in the flight a bit, but he went forward the way you would expect him to a delivery like that, and there was faint inside edge. We'll come to that part later. Anil Chaudhary, from what he saw with the bat and pad so close to each other, in a split second, he took the decision which he thought was right. Absolutely fine. No issues with that at all. That mistake can happen. But to not use the technology correctly, there were multiple angles that were shown time and time again, where even to an untrained eye, you could make out that there was a clear inside edge leading onto the pad. The ball had changed that course of direction from the time it took the inside of the bat before it went on to hit the pad. So to say that it was inconclusive, I think is not fair in terms of the reasoning that the third umpire has given, because it's not only about ball tracking, it's not only about snicko or the inside edge. You need to use technology in its entirety, which means use as many angles as are available to you to take that right decision. And it was very, very clear. I was talking to you, Chaitanya, if you remember, prior to us starting the show. Even somebody like Shane Warne, who is very critical at times of the use of technology, as we've seen across his multiple media interactions, he came out on Twitter about half an hour back to say this is simply not out. We often discuss technology and its use and accuracy. The main problem is the interpretation of that technology. Here's a perfect example of the ball clearly hitting the edge of the bat first. And like I said, if somebody like Shane Warne has pointed that out, to the untrained eye per se, even as analysts, when we look at it, it was fairly obvious that there was that clear inside edge. So what made Virendra Sharma as the third umpire change that decision and say that it was inconclusive evidence? I'm really not sure. And talking about the umpire, with due respect to him and his position, he had a fairly poor match in the first match, which was reported largely across the media. So to then come on the back of that and be third umpire here, have the technology to your disposal, and instead of trying to get to the right decision, stick to the so-called safer decision of sticking to the on-field umpire's decision, I think was a slightly poor judgment call. वैसे ना काफी डिस्कशंस हो रहे हैं अंपायरिंग पे भी, और क्यों ना हो, अगर हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग फील्डिंग की बात करते हैं, कैप्टनसी की बात करते हैं, तो व्हाई नॉट अबाउट अंपायरिंग एज वेल.
और यहाँ पे ये कल बड़ा डिसीजन, बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे, वी वर सरप्राइज्ड कि कैसे ही जस्ट सेड दैट वाज अनकंक्लूसिव एविडेंस इवन विदाउट टेकिंग मे बी द बॉल ट्रैकिंग, एंड देन ही वाज रिमाइंडेड बाय अंपायर अनिल चौधरी. सो काफी प्रेशर भी होता है, बट आई मीन दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट इन अ टेस्ट मैच, इजंट इट? यस, और जैसे आप अभी पूछ रहे थे चैतन्य कि देखिए वो जो पहला डिसीजन, अगर ये पूरा जो डिसीजन दिया वीरेंद्र शर्मा ने, वो पूरे डिसीजन को अगर हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें, तो जब भी उन्होंने जो एंगल्स मांगे या अल्ट्रा एज मांगा, जूम एंगल मांगा, देखिए जब पहली बार उन्होंने जो बोला था ना, जो आपका डिसीजन है उसी के साथ रहिए आउट, तब तो बॉल ट्रैकर देखा ही नहीं था. तो दैट इन इटसेल्फ इज अ मेजर मेजर मिस्टेक, क्योंकि आप एलबीडब्ल्यू का डिसीजन जब दे रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं. तो वो जो प्रोटोकॉल पहला था वो फॉलो हुआ ही नहीं, उन्होंने वो आउट दे दिया था. क्योंकि क्या होता है कि अभी टेक्नोलॉजी में हम सुन सकते हैं when we are watching the telecast on television कि थर्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, तो वो आवाज जाती है. तो तब उन्होंने बोल दिया था कि ये आउट है. पर अगर आप गौर से देखोगे तो अनिल चौधरी ने वहां पे उनका जो कॉर्डलेस होता है वहां पे बताया कि बॉल ट्रैकिंग देखो और फिर बताओ. तो फिर उन्होंने बॉल ट्रैकिंग देखा और बॉल ट्रैकिंग में देख के बताया कि ये आउट है. कमिंग टू दैट इनसाइड एज, अगर आप बारीकी से देखोगे, सोशल मीडिया पे देखो या जो भी वेबसाइट्स पे वो वीडियो है वो देखिए, वहां पे दिख रहा है कि वो बैट का जो अंदरूनी किनारा है, इनसाइड एज, वहां पे पहले बॉल लगा और फिर पैड को लगा. यहां पे दो थियरीज आ रही है चैतन्य, कि जो बोल रहे हैं कि ये नॉट आउट है, जैसे हम बोल रहे हैं यहां पे ये नॉट आउट है, हम कह रहे हैं कि पहले बैट को लगा फिर पैड को लगा. और जो कह रहे हैं ये आउट है, उनकी थियरी ऐसे है कि वो बैट को लगने से पहले फेंटली पैड को लग के गया था. पर अगर आप बार बार वो वीडियो देखोगे तो मुझे तो ऐसा लगा, सी दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, वी कैन नॉट हैव एनीबॉडी एल्स कम टू आवर ओपिनियन. मेरा ओपिनियन ऐसा है, जैसे ऋत्विक कह रहे थे कि पहले बैट को लगा है और फिर बैट को लग के वो पैड को लगा है, एंड इफ इट हैज हिट योर बैट फर्स्ट यू कैन नॉट बी एडजस्ट एलबीडब्ल्यू. मुझे एक एनेक्डोट याद आता है चैतन्य, कि जब हम अंपायरिंग का कोर्स कर रहे थे, तो हमारे जो अंपायर के कोच थे या विलास बांदुडेकर, वो हमेशा कहा करते थे, हर हर लेसन में कहा करते थे कि सी फ्रेंड्स, बडिंग अंपायर्स, यू मस्ट रिमेंबर द लॉ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ is not written in the book, and that most important law is common sense. आपका लॉ होगा, आपके प्रोटोकॉल्स होंगे, आपके रूल्स होंगे, आपके प्रोसीजर्स होंगे, पर वो अप्लाई करने के लिए आपको कॉमन सेंस लगेगा. यहां पे मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि वो अप्लाई नहीं हुआ, पर अगर आप बार बार देखोगे तो वो ऐसा ही लग रहा था कि इनसाइड एज लग के फिर पैड को लगा है. बट जैसे विराट कोहली ने वहां पे रुक के एक बार बात भी की अनिल चौधरी जो उधर ऑनफील्ड अंपायर थे, कि अरे मुझे भी तो लग रहा है कि ये इनसाइड ऐसी. और एक मुझे याद आ रहा है चैतन्य, कि जब हम वो देख रहे थे, जब वो बैट को बॉल लगा, तो जो भी वहां पे लोग प्रेजेंट थे ना स्टेडियम में, देखिए ज्यादा बड़ी संख्या में लोग है नहीं, पर जो भी थे उनका एक जोर से शोर सुनाई दिया. और ये जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ना, ये सारी टेक्नोलॉजी जानते हैं. उन्हें तभी पता चल गया था कि अरे नहीं, ये तो इनसाइड एज लग गया है और फिर पैड को लग गया. उन्होंने शोर भी मचाया क्योंकि उन्हें लगा था कि ये रिव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं. तो इसीलिए इस डिसीजन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, डीआरएस के ऊपर इतनी सारी चर्चा हो रही है. पर जैसे ऋत्विक कह रहे थे, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि वो जो डिसीजन था वो आउट नहीं, वो नॉट आउट देना चाहिए था. बट वॉट एवर द डिसीजन इज, हैज टू बी टेकन, एंड इट स्टेज एज व्हाट इट वाज. चैतन्य, Ritvik, there are certain challenges that need to be overcome when it comes to technology as well. And हम कह रहे हैं कि इतना technological advancement हो चुका है, wherein we have DRS, we have ball tracking, we have ultra edge भी आ चुका है. So why do we still have the umpire element? तो important होता ही है, ठीक है, okay, given. But still, if we are making use of the technology, why can't it be foolproof? So, with technology being foolproof, there's always an issue because there will be certain aspects of technology that you can never fully control. So, for example, when it comes to the DRS ball tracking, that's fairly easier to manage from an analyst's point of view or a technical person's point of view because it's in straight lines. There's a direction that flows and so on and so forth.
To go back to this example itself of what happened yesterday, right? There is a huge amount of interpretation that comes in terms of such decisions based on the use of technology. We keep on talking about the fact that the technology will never probably be foolproof, and it's not possible for the simple reason the various angles might denote something once. There is a visual illusion element that comes in if you see something from a different angle as well. So those are the aspects that technology will still struggle to an extent, no matter how advanced we go in technology. But like Prasanna was saying, common sense, application of the laws of the game, application and interpretation of how that logical sequence is followed when you're taking a decision based on technology. These are elements that you can control. These are elements that you can get right based on whatever's available to you. This, I don't think, in this particular case was followed, and we've seen that this is not the case in quite a few instances as well. There's another instance which is very, very important, and I'm glad, Chaitanya, you brought this up. There is an aspect of the soft signal, for example, in games nowadays that is used, right? Now, if a ball has been hit by a batsman and it goes towards the edge of the boundary, and a fielder comes running in and takes a very, very close catch near the ground, there are often instances where the umpire, on-field umpire, gives it out as a soft signal. If you as an umpire are unsure, then how does this entire concept of a soft signal even come into place? How can you see something 70, 80 yards away, assume that it's out, hence you're giving a soft signal? Because then the challenge becomes for the third umpire to have, like they said yesterday in that phrase, conclusive or inconclusive evidence to overturn that original decision. If it is something that you're unsure of, instead of the soft signal, leave it completely to technology. Let the decision and that entire process be followed based on that. And I think that's again something which has been doing the rounds in cricketing circles. And I hope it comes up more and more, because I honestly feel that the soft signal element is also something to be looked at moving forward, because that also, in certain cases, hampers the game pretty majorly. And also on this umpiring topic, Chaitanya, ये क्या हो गया है कि पिछले एक दो because of the pandemic, you no more have the neutral umpires. You have the home umpires to officiate all across. Normally कैसे होता था कि टेस्ट मैचेस में whether it's the on-field umpires or the third umpire, everybody used to be a neutral umpire. But अभी जहां जहां भी मैचेस हो रहे हैं वहां पे home umpires ही officiate कर रहे हैं. And they must look at it as an opportunity. Yes, there are challenges, but it is an opportunity क्योंकि कितने सारे अंपायर्स को उनके देश में टेस्ट मैच अंपायरिंग करने का मौका नहीं मिला है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रल अंपायर रूल्स. बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक आपको ये मौका मिल रहा है. यू मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट. अगर आप बांग्लादेश का सोचोगे चैतन्य, बांग्लादेश में जब भी सीरीज होती है तो वहां पे अभी भी पैंडेमिक के एरा में भी एक न्यूट्रल अंपायर बुलाया जाता है और एक होम अंपायर होता है, क्योंकि I think the ICC still thinks that they do not have, Bangladesh do not have the required qualified umpires to officiate in a test match. The home umpires I'm talking. तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो रिचर्ड केटलब्रो आए थे, माइकल गॉफ आए थे, एक होम अंपायर था और एक न्यूट्रल अंपायर था. बट हियर इन इंडिया द आईसीसी थिंक्स दैट यस देयर आर क्वालिफाइड अंपायर्स हु कैन ऑफिशिएट इन अ टेस्ट मैच. जैसे पहले मैच में हमने देखा, दूसरे मैच में देख रहे हैं नितिन मेनन जो है वो तो बेहतरीन अंपायर है, वो तो एलीट पैनल में भी है, पर दूसरे अंपायर जो है वो एलीट पैनल में नहीं है. दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी. दे मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. और ये भी अभी डिसीजन शायद रिव्यू किया जाएगा चैतन्य कि पैंडेमिक तो है, सब ठीक है, इज इट टाइम इफ द प्लेयर्स आर ट्रैवलिंग, if the players are traveling from one continent to another, then why can't 2 or 3 umpires travel with them just to ensure that proper decisions are taken in a very, very crucial stage or in a very, very important test match like this, which is a virtual decider, Chaitanya? Continuing on the same point, Prasanna. Yes. Sorry. Go on, Chaitanya. Go on, Rich. Go on. Go ahead. Acha. So just to add on to what Prasanna is saying, there's one more aspect, guys. There's an element of qualified umpires, and there's also a question of competent umpires.
And I think currently, from what we've seen in this series so far, there seems to be a gap between these two. Qualifications you can acquire, you can go get all your courses, whatever needs to be done in terms of ticking the box to become a qualified umpire for a test in India, wherever. To have the element of competency, which comes not only from knowing the laws, but how to interpret them, how to take the right decision in terms of outs, not outs, fair play, so on and so forth, especially in pressure situations, which keeps on happening more often than not in Indian situations or in Indian circumstances in test matches here in India. These are the elements that need to be looked at in addition to the qualification. I think competency is one of the key factors. And if that is not met, no matter how qualified you are as an umpire, then that will always be a drawback in you moving forward as an umpire. And I think that's one of the main issues I personally feel we've had so far in this series. The competency aspect hasn't been as high as we would expect from an international series. काफी सवाल है इसी विषय पे. उस बीच एस खंडारे कह रहे हैं that Virat Kohli was not out and this test match perhaps needs neutral umpires. Prasanna, continuing on the same topic, अगर assessment की बात करते हैं, if a batter, bowler or a player is out of form, he is analyzed, scrutinized and maybe kept out from the next match. Analysis होता है, assessment होता है of players. Does something similar happen with umpire as well? अगर continuously कुछ mistakes हो रहे हैं, तो can you explain our viewers कि उनका assessment marking system कैसे होता है? Yes, assessments are done and also there is an umpire's coach, क्योंकि जो भी अभी elite panel में होते हैं, elite panel में umpire's coach होते हैं, mentor होते हैं, guidance दिया जाता है, feedback दिया जाता है, captains भी जो दो होते हैं वो भी हर एक मैच के बाद उनका जो assessment होता है उनको भी एक दिया जाता है एक पैरामीटर और वहां पे वो भी बताते हैं कि उनको इस टेस्ट मैच में अंपायरिंग कैसे लगी. मैच रेफरी भी जो होते हैं वो भी बहुत बारीकी से इन सारी चीजों पे ध्यान रखते हैं और इन्हीं सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर अंपायर का प्रमोशन या डिमोशन होता है. तो देखिए जो भी अंपायर अभी इस एलिट पैनल में नए आए हैं, एक है जोएल विल्सन है, एक है नितिन मेनन, पहले माइकल गॉफ थे. ये भी पहले एलिट पैनल में नहीं थे. वो लोकल अंपायरिंग करके फिर वहां पे डोमेस्टिक मैचेस करके फिर वनडे मैचेस कर रहे थे उन्हीं के देश में. वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, फीडबैक भी अच्छा आया, दे वर प्रमोटेड. नाउ दे आर ऑल a part of the elite panel. तो ये असेसमेंट होता रहता है, रेगुलरली असेसमेंट होता रहता है. आईसीसी की एक अंपायर्स की टीम होती है जो ये असेसमेंट करती है. सीनियर अंपायर्स फीडबैक देते हैं, सीनियर अंपायर्स गाइड भी करते हैं. सी रॉन्ग डिसीजंस होंगे, ठीक है, एज एन अंपायर दैट इज अ गिवन कि कोई भी जानबूझ के आउट या नॉट आउट गलती से नहीं देता है, बट you will also see the frequency of those wrong decisions and also the frequency of the correct decisions. If you are giving more correct decisions and lesser wrong decisions, that means you are likely to be promoted. और ऐसे ही promotion होता है. हमने ये भी देखा है चैतन्य कि एलिट पैनल में से कई ऐसे अंपायर्स थे जिनका डिमोशन हो गया एंड they were not given an extension of the contract in the elite panel based on their performance on field, based on assessments given by the captains, by the ICC team. तो ये रेगुलरली होता रहता है. तो जैसे हम प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे हम प्लेयर्स के हम बोलते हैं कि आज अच्छी बैटिंग की, आज अच्छी बॉलिंग की, आज अच्छी फील्डिंग की, वैसे अंपायरिंग का भी होता है. एंड द हाईएस्ट रैंक दैट यू कैन गो टू इज द एलिट पैनल, जहां पे सिलेक्टेड फ्यू गेट टू ऑफिशिएट इन नॉट ओनली द आईसीसी इवेंट्स बट वेरेवर देयर आर न्यूट्रल अंपायर्स टू बी एम्प्लॉयड. दैट इज व्हाट द आईसीसी डज. सो दैट इज अ कंप्लीटली डिटेल्ड प्रोसीजर. जैसे मैं अभी यहां पे समझा रहा था कि असेसमेंट डेफिनेटली होता है, परफॉर्मेंस डेफिनेटली इवैल्यूएट होता है. यू आर नॉट ओनली रिवॉर्डेड but also if you're not doing well, there is a demotion also which comes in the panel that you are next in line to. तो ये सारी चीजें होती रहती है और अंपायर्स को भी ये मालूम होता है. एंड जैसे हम कह रहे हैं चैतन्य कि टू err is normal, ये ह्यूमन एरर होगा ही. बट अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास इतनी सारे मीडियम्स अवेलेबल है, द इंटेंशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी बाय द आईसीसी टेक्निकल कमिटी इज कि ज्यादा से ज्यादा डिसीजंस करेक्ट आए. इसमें अगर थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, देन अगेन देयर विल बी अ कंसिडरेशन गिवन टू ऑल दीज डिसीजंस दैट हैव बीन टेकन.
ओ यस, क्वाइट अ टॉपिक दिस इज। और इतनी चर्चा हम लगभग पिछले पिछले 20 मिनट इसी पे चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि इतना टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजंस देना, बिकॉज वी हैव सीन मैचेस बीइंग टर्न्ड, रिजल्ट्स कंप्लीटली चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ अंपायर्स डिसीजन। एंड स्पीकिंग फ्रॉम एन इंडियन फैन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात कहूं, तो अगर सचिन के पास भी डीआरएस होता तो लगभग 150-200 सेंचुरीज भी उनके हो ही जाते, हैड टेक्नोलॉजी बीन इंप्लीमेंटेड एंड द राइट डिसीजंस गिवन व्हेन ही वाज इन द 90s। तो ये टॉपिक शायद कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना इतना चर्चा करने जैसा है इस पे। शायद हर सेशन में एक एक दो सवाल आते ही रहेंगे। पिछले मैच में भी हो रहा था अंपायर्स पे, ये मैच में शायद होगा, वी होप नॉट, पर शायद होने की संभावना है। गेटिंग बैक टू द मैच अगेन, ऋत्विक, पहला सेशन डे 2 ऑलवेज इज इंपॉर्टेंट। डू वी सी द सीमर्स कमिंग इन, या फिर से एजाज पटेल का जादू चलने वाला है? I depending on how it is at the ground, to be honest, I think if there's any hint of any sort of overcast conditions, then they might get their seamers in, because it's the ball is 70 overs old, right? In about 10 overs, the new ball will be eligible anyway. So at that time, they would definitely like to use the seamers a bit. So it will depend on how the conditions are. I see Ajaz Patel bowling a lot today, because he was obviously the pick of the bowlers yesterday. We spoke about it in depth, the way he used the flight, the length, the control that he had, the way he kept on, messing with the batsman's mind. Yes, he was fairly strong from one end, but the problem then, like we discussed yesterday also, was he didn't get any support from the other end. But the morning session today, Chaitanya, is important from another perspective as well, which is, if you remember in the first test, after India was 250 odd on day one, they collapsed to 345 on day two. You have to be careful as the the unbeaten batsman coming in, that you need to play out that morning session properly and not trigger a collapse. Because if you trigger a collapse, then for all you know, India might suddenly find themselves not having as big a total as they would want. And like I was saying yesterday, India would ideally look to bat out the first innings with as much runs as possible on the board, so that they don't have to bat again in this match. So now talking about the first session, वानखेड़े फोर्थ इनिंग्स में शायद आपको फिर से बैटिंग नहीं करनी है, so is this the chance for India to put a big score? तो क्या टारगेट होगा so that India will might not have to bat again? See, India will definitely look to score about 375, 400, and also because ये पहले ही दिन पे देखे एजाज पटेल को जो असिस्टेंस मिल रहा था, वो डेफिनेटली और भी मिलेगा आज डे 2 पे, और वो बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे टेस्ट मैच प्रोग्रेस होता है. सो आई थिंक एनी स्कोर अबाउट 375, 400 शुड बी अ वेरी वेरी गुड स्कोर on this pitch at the Wankhede Stadium, and I think India are on course to do that, unless जैसे अभी ऋत्विक कह रहे थे कि अगर कोलैप्स हो जाता है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी जो आने वाले बैटर्स भी है चैतन्य, रविचंद्रन अश्विन है, अक्षर पटेल है और जयंत यादव है. जयंत यादव ने इसी स्टेडियम पे सेंचुरी भी की है, तो अगर जडेजा नहीं भी है, ये तीनों जो है, they are very very good batters in these conditions, and you must back India at this stage to score about 375, 400 for sure. But to ensure that there is no collapse, I think Agarwal and Riddhiman Saha will play a very very important role as far as the first session of day 2 is concerned. So let's head back to the Wankhede Stadium. Thank you so much, Ritvik Sen and Prasanna San, for this detailed discussion about so many aspects. Thank you, Chaitanya. Majorly Thank one you, aspect Chaitanya. in the morning show. So खबर यह है 221 for 4 at the end of 70 overs. और अपडेट ऐसा हो रहा है कि तीनों सेशन जो होते हैं जनरली 2-2 घंटे के, उसमें थोड़े से बदलाव होने वाला है. पहला सेशन होगा 9:30 से 11:30, 2 घंटे का. जी हाँ. दूसरा सेशन होगा 12:10 से 2:40, और फिर तीसरा सेशन जो होने वाला है वो 3 से 5, दैट इज टू एकोमोडेट 98 ओवर्स, क्योंकि कल थोड़ा सा खेल जो था वो नहीं हो पाया था इन द फर्स्ट सेशन. सो टू मेक श्योर कि कॉम्पेंसेट हो जाए, थोड़ा सा खेल बढ़ाया जाएगा. और ज्यादा खेल हो रहा है उससे किसी को प्रॉब्लम है नहीं, पर हम मिलेंगे जरूर एट द लंच टाइम सेशन. डिस्कशन फिर से करने वाले हैं 11:30 बजे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. सी यू बैक एट 11:30 AM IST. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.